Makemytrip.com एक ट्रैवल पोर्टल है. इट्स इंडिया सेंट्रिक ट्रैवल पोर्टल. सो जो भी इंडिया में आ रहा है और या इंडिया से बाहर जा रहा है, सो एनीथिंग कमिंग इनटू इंडिया, गोइंग आउट ऑफ इंडिया, हमने एक सर्च इंजन बनाया फ़्लाइट्स के लिए विच इज़ वेरी स्पेशल. व्हाट द सर्च इंजन डज इज़ दैट आपको डिस्काउंटेड फेयर्स देता है फॉर ऑल फ्लाइट्स इनटू इंडिया एंड आउट ऑफ इंडिया, और रियल टाइम में ट्रांजैक्शन हो जाती है. तो 2-3 मिनट में आपका PNR नंबर आ जाता है आपके पास. सो अवेलेबिलिटी भी दिखाता है इमीडिएटली, और इमीडिएटली आपकी बुकिंग भी हो जाती है. सो दैट इज़ द USP ऑफ द साइट. फेरी क्वीन एंड सरिस्का एक्चुअली आर बोथ फीचर्ड ऑन makemytrip.com. दोनों को काफ़ी अहमियत दी गई है Makemytrip पे. बट दिस वॉज द फर्स्ट रन ऑफ द फेरी क्वीन, और हम लोग चाहते थे देखना कि व्हाट द होल एक्सपीरियंस इज़, and it's a pretty good experience. We are anyway promoting Sariska Palace on our exciting deal section. और अब एक पैकेज डेवलप करेंगे with both Fairy Queen and Sariska and offer it to people. And I think the exciting part is that it's available for charter. And there are a lot of people interested. There are a lot of NRIs, foreigners जो चार्टर में काफ़ी इंटरेस्ट दिखाते हैं आजकल. हम ऑलरेडी फ़्लाइट्स के चार्टर के बारे में बात कर रहे हैं, एंड ट्रेन चार्टर इज़ जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ दैट. So yeah, we'll be looking at promoting both the Fairy Queen and Sariska on the portal. सरिस्का पैलेस और रेलवे का जो जॉइंट टाई अप हुआ है, एक फ़ायदा सरिस्का पैलेस को जाएगा, एक फ़ायदा रेलवे को जाएगा. Sure. मेक माई ट्रिप को इसमें क्या फ़ायदा? Makemytrip को इसमें ये फ़ायदा होगा कि we've got a special deal with Sariska Palace, so we can throw in lot of value additions to our customers. So उसी सेम प्राइस में अगर हम फेरी क्वीन की भी एक ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम दिल्ली टू सरिस्का अगर दिखाएं, so that's a value addition for Makemytrip customers, and that's what the whole site is about. The whole site is about giving extra value. थोड़ा सा कुछ ज़्यादा कस्टमर्स को देना है साइट पे हर चीज़ में. फ्यूचर प्लान क्या है Makemytrip के फ्यूचर प्लान्स हैं टू do different versions of the site in different languages. That is one feature. Then do online bookings for hotels also. That is actually going to be a second step. अभी हम फ्लाइट्स की करते हैं रियल टाइम में बुकिंग, अब होटल्स की करनी शुरू करेंगे as soon as there are softwares available, जिससे पता चले अवेलेबिलिटी क्या है वेरियस होटल्स में अराउंड द वर्ल्ड, और इमीडिएटली उसकी कॉस्टिंग करके वी कैन एक्चुअली मेक अ बुकिंग सिटिंग ऑन योर कंप्यूटर. Fairy Queen journey was very comfortable one. The catering, the food, the lunch, as well as the snacks that were given to us were very nice. The quality and the taste was excellent. As far as journey ka sawal hai, journey was very comfortable. Indian Railways and the Sariska Palace saw to it that the passengers were as comfortable and were looked after very well. Sariska Palace is a completely different experience altogether. I believe one must go there. I mean, a weekend break from the we're working and it's a hectic life there in Delhi or any metropolitan. So Sariska is a very good getaway in the sense that you get to relax totally, because they have Ayurveda center, the swimming pool, the recreational activities, as well as the rooms are so comfortable, and the cultural programs जो उन्होंने arrange किए हैं हमारे लिए, they were very nice and very entertaining. So if a person who is looking for a break from the regular rigmarole of working every day, it is a completely entertaining as well as a good getaway for a weekend. Safari शेर तो नहीं देखे, जिसके लिए हम बहुत most of us were excited for that actually. But apart from that, the way the forest has been conserved, and the other animals that we saw like deers, antelopes, sambar dekhe हमने wild pigs dekhe. So not the tiger part missing. Apart from that, the safari was a very pleasurable experience and a very good adventure. So one must go, if you're visiting Sariska Palace, one must make sure that you go for the safari. See, one thing would be that the Fairy Queen is basically going to be running from October and November onwards. So there would be no problem, as in the weather situation would be very comfortable, so the AC is not required. So one thing would be that, and I think as far as the decor and the way it goes, the way it rolls, is completely comfortable, and it should remain the way it should. Of course, you can always make yourself better,
There's always scope for improvement. But this journey has been a pleasurable and comfortable one. Then start. Okay, well, Say, let him ask you are, questions. You are so and so, Yeah, and yeah. Let him ask questions. It's easier. Yeah. Did you like the journey from Delhi to Alwar by this small and beautiful train? Sorry, I can hardly hear you. It's, Do you like this journey? yes, it's lovely. Yeah, it's a nostalgic journey into time, I think, and yeah, it's a very how do you say that? Yeah, going back in time, you realize how it used to be, and yeah, it's Would you like to say something about this beautiful train? this train, the Fairy Queen. This train, this coach, This hostels. it's lovely. It's very well hosted by I think the Sariska people. Yeah, the food is nice. It's a bit hot, but maybe we can do something about it. Especially in the summertime, I think it's too hot. Would you like to give your own solution for this A trip like this, facilities or accommodations? if you want to make it for tourists, I think a one-way trip would be better than a two-way trip, because in general, tourists have little time and they want to see as much as possible. And then I think in the second trip they say, oh my god, another 6 hours. So I think a one-way trip would be perfect, and then you combine it with other trips, and there's so much to see and to do around here that there's no problem. Yeah. Okay, you're welcome. अच्छा ये सौरभ, तुमको ये फेरी क्वीन ट्रेन कैसी लगी? बहुत पसंद आई। क्या क्या पसंद आया तुम्हें इसके अंदर? मतलब जैसे सीटिंग अरेंजमेंट है और मतलब लाइटिंग है, ये बहुत पसंद आई। और इसका इंजन तुमको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। अब कोयले वाले इंजन नहीं चल रहे हैं। हाँ, तो लगता है कुछ अच्छा इसमें क्या क्या पसंद आया ये? इंजन में काफ़ी कुछ पसंद आया। मतलब जो इसके इसकी जो सजावट की हुई है, आगे से लिखा हुआ है, ये बहुत पसंद आया। अच्छा ट्रेन के अंदर तुमको क्या क्या अच्छा लग रहा है? एक आम मतलब ट्रेन से अलग हट गया है, तुम बैठ रहे हो तो खाना पीना पेंटिंग वेंटिंग सब पसंद है? वैसे बेड पेंटिंग वेंटिंग पसंद आई, और मतलब अच्छी तरीके से मतलब खातिरदारी करते हैं, और बैठने का बहुत अच्छा लगा। तो सरिस्का घूमे? हाँ जी, सरिस्का कैसा लगा? पैलेस और सफारी अलग अलग बताओ। सर इसका और बहुत पसंद आया, हाँ। और उसमें जो रूम्स थे बहुत अच्छे थे, और जो वहाँ पर फिर टाइगर डैन लेके गए, उसमें काफ़ी कुछ देखने को मिला, बहुत पसंद आया। ठीक है, थैंक यू। कल मैं आपको दिल्ली से अलवर और अलवर से सरिस्का की, दिल्ली से अलवर फेरी क्वीन की जर्नी कैसी लगी पहले मुझे बताइए। फेरी क्वीन की तो बहुत अच्छी लगी, खासकर इंजन में बैठने के बाद तो ज़्यादा अच्छी लगी थी। लेकिन ये है कि शुरू की गर्मी थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा हो जाती है। एसी होता तो ज़्यादा अच्छा होता, पर थोड़ा बहुत झेलना पड़ता है, बट वर्थ है। फेरी क्वीन की स्पेशलिटी इसका इंजन है, इसका इंजन के बारे में आप क्या कहना है? इंजन तो बहुत खूबसूरत है, पर मज़ा उसका तभी आता है जब आप इंजन में बैठो। इंजन में बैठिए, धुआं खाइए, धूल मिट्टी अपने ऊपर लीजिए, उसके बाद उसका सही चार्म आपको पता चलता है कि क्या चीज़ है ये। सरिस्का पैलेस और सरिस्का सफारी जी। आपको कैसा लगा? दोनों अलग अलग बताइए। सफारी तो किस्मत की बात है, बाघ दिख गया तो दिख गया, नहीं दिखा तो आप घूम फिर के आ जाइए जंगल में। पैलेस वाकई बहुत अच्छा है, काफ़ी मतलब 700 एकड़ करीब ज़मीन पे है, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। फैसिलिटीज़ आर वेरी अप टू डेट, और दिल्ली से भागने के लिए बहुत सही जगह है। आप 3 दिन 4 दिन का ब्रेक लीजिए दिल्ली से, कोई पोल्यूशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, भीड़ भाड़ से दूर आराम से रहिए, फ्रेश होकर आदमी वापस आ जाएगा दिल्ली से। हम आपके पर्सनल राय ये जानना चाहेंगे कि इस ट्रेन में आपके लिए मतलब आप और पैसेंजर्स के लिए क्या क्या फैसिलिटी होनी चाहिए? फैसिलिटी फ़िलहाल तो फ़िलहाल तो अब लगभग सब कुछ ही है, और ज़्यादा इससे ज़्यादा से ज़्यादा आप ये कर सकते हैं, इसमें ठंडक और थोड़ी सी डाल सकते हैं, बट चूँकि ये ट्रेन विंटर में चलती है तो उसकी भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी नहीं आगे चल के। दिसंबर में वैसे भी ठंड हो जाएगी, बट अदरवाइज़ लगभग सब कुछ ही है Are you happy with this? कम्प्लीटली।